All right. Good evening again. So let me just join from the another account. Okay. I'll be dropping off from this account. Just a second, guys. Yeah. Sorry for the delay, and I guess I'm clearly audible to everyone. Please, everyone, give confirmation in the chat box, and I'll be presenting my screen now. All right. So yeah, clearly audible. All right. So guys, what we will do, we'll quickly take the recap of whatever we have learned in the past few lectures. Okay, so we'll not waste more than 10 minutes on the previous things. Okay, so we have seen y delta transformation, or it is also called as star delta transformation. I have given these formulas with you also. I'll be providing this uh, PPT with you also today. Okay, after the class, I will be sharing this PPT on the group. So after that, whatever we have seen. Let me just quickly go to the Thevenin's theorem. So in the Thevenin's theorem, this is applicable for only linear and bilateral networks. So what does that mean? Linear means the circuit which contains only linear elements, linear as well as bilateral. So Thevenin's theorem can be applied on such circuits only. Okay, so that is being said. Now how do we apply Thevenin's theorem? हम Thevenin theorem किस तरीके से apply करते हैं? So let us suppose we have given one complex circuit, and what we do, we have a complex circuit and we have RL. So we replace this complex circuit with VTH and RTH. VTH stands for Thevenin voltage and RTH stands for Thevenin resistance. All right. So we have to do calculation of these two things, VTH and RTH. And now, how do we calculate VTH and how do we calculate RTH? So, if in case you have any confusion, I'll clear it. Okay. So, first of all, VTH calculation is universal for all. Uh, let us suppose the circuit contains independent as well as dependent sources. It doesn't matter. Okay, we have only one method to find out VTH. How do we find out? We just simply replace the load resistance RL. We just simply replace, or just take out the load resistance RL, and we calculate voltage across those open terminals. So that is called as VTH, or Thevenin's voltage. Okay, so this is the simple calculation of VTH. Now we have calculation of RTH. For calculating RTH, we have two different methods, or two different ways. So what are those? So the first type is when the circuit contains independent sources only. Now you all are very clear about independent and dependent sources, right? So if the circuit contains independent sources only, that means it has no dependent source. So in such case, what we do, we remove the load resistance RL. हमें आर एल जो है वो हमेशा रिमूव करना ही है. नाउ इन दिस केस, और जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं आपको आर एल कह रहा हूं. सो मे बी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे या फिर जब प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो इट मे बी पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ आर एल माइट बी 4 ओहम, 8 ओहम, 1 किलो ओहम, वॉट एवर इट माइट बी. इट डजेंट मैटर. The value of load resistance doesn't matter. Okay, it should not bother you, because we are going to remove it in all the cases. ठीक है, हमें VTH निकालते वक्त भी RL को रिमूव करना है, RTH निकालते वक्त भी हमें RL को रिमूव करना है. So don't bother about the value of RL. Okay, simply consider it as a load resistance. Now we have to remove the RL, and we have to replace all the independent sources by their internal resistances. मतलब जब हम RTH का कैलकुलेशन कर रहे हैं, in that case we have to replace the independent sources by their internal resistances. मतलब कि अगर voltage source है, so we'll short circuit it, and if current source is present in the circuit, we will open circuit it. That is clear. So this is the first type of calculating RTH, when
the circuit contains only independent sources. Now if you see in this example, I think here was one voltage source which we have replaced with the शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में देखा है. नाउ द सेकंड टाइप इज when circuit contains independent and dependent sources. तो इस केस में हमें क्या करना है कि जो हमारा आर एल है उसे हमें रिमूव करना है, एंड इन प्लेस ऑफ आर एल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट a voltage source V, and we have to show that the current I is flowing through that voltage source. So in that case, V by I, we have to calculate V by I, that will be equal to RTH. ठीक है, सो इस तरीके से. एंड वन मोर थिंग, वी डोंट हैव टू रिमूव और वी डोंट हैव टू रिप्लेस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस. हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को यहाँ पे भी रिप्लेस करना है, बट डिपेंडेंट सोर्सेस विल बी as it is in their place, right? So yeah, already हम लोग देख चुके हैं. This was just a recap. How do we find out VTH? How do we find out RTH? And then we had calculated some. We have solved some circuits as well. I think I had given this circuit for you to practice at home. I don't know how many of you have done that. Then we had the Norton's theorem. So difference between Norton's theorem and Thevenin's theorem is just only this. Like in Norton's theorem, what we do, instead of calculating VTH, we calculate IN. For Norton's current. Okay, I for current and N for Norton's current. So we will see in Thevenin's theorem, we used to replace the circuit with VTH, RTH, and RL. These three elements were there. And in this particular circuit, we have again three elements, but the elements are IN, RN, and RL. So IN will be calculated. We will calculate IN? IN will be calculated. We will remove the load resistance RL. We will short circuit that branch, and we will calculate the current flowing through that particular branch. That will be our IN. How do we calculate RN? RN and RTH are one and the same. Calculations are 100% same. So we don't have any different thing here, right? So this was Norton's theorem. Although we didn't solve any questions based on the Norton's theorem, you can try it at home. And if you find any difficulty, we can discuss that. I don't think it will be much difficult for you. Okay. So guys, anyone have any kind of confusion or like question in Norton's theorem and Thevenin's theorem? Anything? If anyone is having anything, we can discuss it. If you don't have any doubt question, we can proceed further for the reciprocity theorem. Okay, everybody has joined now, I guess. 1 2 3 4. No, Makka is not joined. Okay, guys, respond in the chat box. Any doubts, question on previous two theorems, Thevenin theorem and Norton's theorem? No doubt. All right, everyone, please be quick now. So if you are quick, then we can solve more number of examples in our defined 100 hours, isn't it? Yeah, fine. So others, ठीक. Okay, all right, fine. So our next theorem is reciprocity theorem. Guys, let me just show you the syllabus first. Okay, so this is our syllabus. All right, and as you can see here, we have covered node analysis, mesh analysis, superposition theorem we are going to learn today, Thevenin's theorem, Norton's theorem we have completed, reciprocity theorem we are going to cover today. Okay, so reciprocity theorem and superposition theorem, these two things is our priority today. And if time allows, we'll see linear two port network as well. Y delta transformation we have already covered. Okay, so this is the part of syllabus which is remaining, and network analysis syllabus is not that big. Okay, so mostly we can finish network analysis by the end of July. Okay, network analysis and control system, both the subjects will be finished at the end of July. Then we'll start uh, two new subjects. All right. So having said that, let's come back to the reciprocity theorem. So reciprocity theorem. So what are the conditions that first of all we have to check in a circuit in order to apply this theorem? So first of all, the circuit should be
linear and bilateral. Okay, the network should be linear and bilateral. Second thing, the circuit should be time invariant. Now, time invariant network, what is time invariant network? We haven't seen this yet. Okay, but as we discuss more circuits in the network analysis syllabus, or even in control system or signal system, you will understand what is a time invariant and time variant circuits. Okay, so no problem about it. And the third and most important thing is the circuit should contain single independent voltage source only. Okay, it has to be like it needs to have only one voltage source. Okay, then and then this theorem works. Now, what exactly is theorem, reciprocity theorem? So all right, so let me just draw one figure to show you how this theorem works. Okay, so in simple terms, let us suppose this is a complex circuit. This is a complex circuit. Okay, and it has a voltage source V here. It has a load resistance RL here. So this is V, this is RL, and current I is flowing through this branch. Okay, I'll just zoom in so that you can see clearly. All right. So this is a complex circuit, and we have voltage source V at input, and at output we have RL and I is flowing through that circuit. So when we apply the reciprocity theorem, so in that case we can change the position of voltage source and current. Okay, so complex circuit will be as it is. We are not going to make any changes in the circuit. Okay, and here RL is as it is, and we will be applying voltage source here. Voltage source, this is RL, and in this branch the current I will be flowing. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया? What we have done, we've just interchanged the position of voltage and current, isn't it? वोल्टेज इनपुट पे था तो हमने उसे आउटपुट पे डाल दिया, एंड करंट जो है वो आउटपुट पे था तो उसे हमने इनपुट पे डाल दिया. वन थिंग ओनली वी हैव टू रिमेंबर इज दैट, लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वोल्टेज की पोलरिटी क्या है? पोलरिटी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड current is flowing from positive terminal. Okay, the current is going from positive terminal. So here also the current should go from positive terminal only. Okay, since the direction of current in this circuit is like this, so you don't have to put the direction of current in this direction. Okay, so it has to be uh, going away from the positive terminal. Okay, so this is the reciprocity theorem. So how do we apply this? Or let us just verify this. Okay, we will verify this whether this thing works or not. So for that we need to have one circuit. I have one circuit for you here. Let us suppose this is one resistance, this is another resistance. We have voltage source here, then we have one resistance. We can say this as a RL. Okay, then we have one volt resistor here also. So it is 4 ohm, it is 2 ohm, it is 3 ohm, and it is 1 ohm. Sorry, just a second. Yeah, 1 ohm, and this is 2 volt. Okay, so this 2 volt battery is here, and current I is flowing through this. Okay, so what we have to do, we have to check if, like, if we replace this battery from here, if we take this battery from here and if we put it here, so same current is flowing through this or not. So for that, first of all, we have to find out how much current is flowing through this particular branch, or what current is flowing through this particular branch. So we have to calculate I. Okay, we have to calculate the value of I here. So you can start calculating. Okay, I'll be calculating also, but you also please calculate. Okay, so now see, those who are not calculating, please focus here. So how do we calculate I? So I is flowing through this 1 ohm resistance. That means the voltage across this should be I volt. 1 into I is I volt. Same current is coming from this branch, so I is flowing here only, isn't it? So it will be plus minus 3I here, right guys?
एम आई राइट? यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज लिखे हैं, आई वोल्टेज और 3i वोल्टेज, आई होप कि आप मुझसे एग्री करते हो कि सर इसी तरीके से वोल्टेज हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑल राइट, ओके। Please respond now, like if when you don't respond, I feel like I'm talking to a computer. Okay, all right, fine. All right, thank you. Let's go. Yeah, so see, if we go from this side, 3i plus 1i, that means the potential or the voltage here will be 4i, isn't it? 4i should be the voltage here. So if we consider these two terminals, okay, let me just point it out. These two terminals, this is the one terminal, this is the second terminal, and the voltage between these two terminals will be 4i. So same voltage should be here also, across this resistance also, right? So 4i voltage should be here also, plus minus, right? So if this is a 4 ohm resistance, 4i voltage is here. So what can be the current from this? What should be the current flowing through this branch? If 4 ohm resistance is there and 4i voltage is across it, so what can be the value of I flowing through that branch? It should be I, isn't it? 4i divided by 4, वोल्टेज क्या है? 4i है, रेजिस्टेंस क्या है? 4 है. सो v डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू I होता है. सो 4i divided by 4 is equals to I. That means I current is flowing through this branch also. Did you get this? Now I is going here, I is going here, I is going here. So what will be the current coming through this branch? Isn't it 2i? It is 2i, right? So 2i is coming from this branch. So it is one I is going here, second I is going here. Now if 2i current is flowing through this branch, so it will be 4i. Voltage here should be 4i. All right. So you can apply the KVL here. Apply KVL here. How do we apply KVL? If we start from here, minus 2 volt plus 4i plus 4i is equals to what? 0, right? So 8i is equals to 2. I is equals to 1 by 4. Value of I is 1 by 4. किसी को कोई डाउट? I is equals to 1 by 4 कैसे आया? So अभी हमें क्या करना है guys? No doubt. All right, fine. Thank you for the quick response. Okay, so अभी I की वैल्यू यहाँ पे हमें 1/4 मिली है, 1/4 एम्पियर. ओके, मैं थोड़ा सा ये यूनिट लिखने में गड़बड़ कर देता हूँ कभी कभी, वोल्ट एम्पियर, तो आप ध्यान रखना. ओके, दिस इज 1/4 एम्पियर. हाउ टू आई केम? ओके, okay, all right. See, Akhil, we have seen KCL, isn't it? The, like, what is KCL? Sum of currents entering a node should be equal to sum of currents leaving the node, isn't it? So from this node, I current is going here. You agree with this, right? Now I current is going through this here, right? So from this node, this I and this I, 2I current is going away, right? So what should be the incoming current? Incoming current should be 2I only, right? If 2I is going away from that node, 2I current should be coming there. So that is why 2I is there. I hope you are asking about this 2I only, right? Okay, fine. Thank you. Now we have found out I is equals to 1/4. Now what we have to do? We have to keep this circuit like this only, but just have to change the position of this voltage source and this current. Okay. So I will draw the circuit again. Yeah. This is 2 ohm resistance. Everything is same. Nothing. I'm not changing anything. Okay. But only this will change. This is 4 ohm, this was 2 ohm, this was 3 ohm, and also we had one
We had one ohm resistance also here, right? Now 2 volt is here, 1 ohm is here, and now I is flowing through this branch. Okay. I guess the circuit is same, but what we have done, we have only interchanged the position of voltage and current. ठीक है, तो वोल्टेज मैंने 2i ही लिखा है ना यहाँ पे, ओके 2v, 2 वोल्ट लिखा है यहाँ पे. So what we are gonna do, we are gonna verify that the value of I here should be how much? Value of I here should be 1 by 4. Okay, so then just give it a try, please give it a try. Okay, just give it a try. Okay, and if you feel like it is quite difficult to give it a try, so let me just solve for you. Okay, so see guys, I current is flowing through this branch. Okay, so what can be the voltage across this uh, resistance? What will be the voltage? Those who are not solving, please reply. What will be the voltage? 2i, 2i should be the voltage, isn't it? V is equals to IR. So I है I and R is 2 ohm. So voltage across this should be 2i. Now see the polarity. जहां से करंट एंटर होगा दैट विल बी पॉजिटिव, जहां से करंट एग्जिट होगा दैट विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल हियर? पोटेंशियल हियर इज 2i, right? 2 ohm, sorry, 2i is the voltage potential across these 2 points, isn't it? इन दो पॉइंट्स के बीच में 2i voltage है. अभी these 2 points are short circuited, so what can be the voltage across this? This should be 2i only, plus minus, right? This should be again 2i. So if this is a 2i, so what will be the value of I flowing, current flowing through this? Current flowing through this will be voltage divided by resistance, which is I by 2. So I by 2 is flowing through here only. Fine. Now from this node, I by 2 is going here and I is going here. So I by 2 plus I, sorry, I plus I by 2. So it will be 3i by 2, right? 3i by 2. So 3i by 2 current should be coming from here. 3i by 2 current should be coming from here. All right. Now 3i by 2 is going in this resistance. So what will be the voltage across it, guys? 3i by 2 into 3, that is 9i by 2. Voltage across this 1 ohm resistance should be 3i by 2. Fine or not? Right, 3i by 2. Now apply KVL here. It should be same, it should be same. Okay, Raman is saying same is coming, it should be same only. Okay, so sorry, I mean to change the marker here. Okay, so apply now KVL here. If you apply KVL here, so what will be the KVL? uh where should I write? Wait, I will write here. So we are starting from here. Okay, so minus 2 plus 3i by 2 plus 9i by 2 plus what is 2i is equals to 0. See, 2i, sorry, 2 plus 3i by 2 plus 9i by 2 plus this 2i. All right. So if you solve this, it will be minus 2. 3i plus 9i is 12i by 2, which can be simply written as 9i by 3. So it can be written as 6i. 6i plus 2i is equals to 0. Now 8i is equals to again 2, I is equals to 1 by 4. All right. So we have verified the reciprocity theorem. I hope it is clear for everyone how do we calculated I, right? Okay. Before moving to the next topic, please give your confirmation that you don't have any doubt in these two topics or in these two examples that we solved.
All right. I have a poor network connection because of. Okay, okay, Sonali, no issues, no problem. Okay. See, if you are facing too much of network issues, you can drop off from the call and you can watch the lecture on YouTube also. No issues like that. Okay. All right. But the advantage of being in live class is what you can ask the things that you are not understanding, isn't it? Yeah, that is the thing. Okay. All right. No problem. So this was our reciprocity theorem. Next one is our superposition theorem. So what exactly is superposition theorem? So for that, let me just take the new slide here, guys. Okay, so I hope it is visible. Now, superposition theorem. Just a sec. Okay, superposition theorem. It should be here. All right. So what exactly is this? This theorem is applicable for linear and bilateral networks. Okay, and source elements or independent should be more than one. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे सर्किट्स पे अप्लाई होता है जिसमें कि जो कि पहले तो लीनियर और बायलैटरल है। Guys, जो भी हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं ना, so mostly linear and bilateral is common for everyone, but there's like in the previous syllabus I guess there was one theorem, the intelligence theorem or something. So that theorem is applicable for everything, but we don't have intelligence theorem in the this syllabus, so we are not discussing about it. So superposition theorem में पहला तो हमारा है linear and bilateral network होना चाहिए. Second condition is that कि इसमें independent sources जो है वो more than one होने चाहिए, मोर देन वन होने चाहिए. ओके, सो इस सुपरपोजिशन थ्योरम का एडवांटेज क्या है? Okay, so let me just give you one example, one circuit, so that we will understand what is the advantage of this particular theorem. Okay, let me just get back to here. So if we want to like simply write about this theorem, so we can write like this. This is a circuit, let us suppose. Okay, it has individual internal resistances. Okay, and we have RL here, and it will be VL, voltage across load, and this will be IL. Okay, so VL will be equal to, guys, V1 plus V2 plus V3 and so on. IL will be equal to I1 plus I2 plus I3 and so on. मतलब मान लो कि हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में लेट अस सपोज तीन इंडिपेंडेंट सोर्सेस है. ओके, तीन इंडिपेंडेंट सोर्सेस है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस और वी विल रिमूव टू सोर्सेस. वी विल कीप ओनली वन सोर्स एट अ टाइम. ओके, एक ही सोर्स हमें रखना है. उस वन सोर्स के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस आर एल है या फिर वो व्हाट वी कैन से द डिजायर्ड रेजिस्टेंस है, तो उसमें से जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसे हम कैलकुलेट करेंगे, नेम देंगे V1. उसमें से वोल्टेज फ्लो नहीं होता है, वोल्टेज अक्रॉस इट होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसे हम नाम देंगे I1. और जो वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस है वो रहेगा V1. अभी वो जो हमारा पहला इंडिपेंडेंट सोर्स था ना, तो उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. जो सेकंड वन है वो यूज करेंगे, जो थर्ड वन है वो यूज करेंगे, लाइक दैट. ओके, सो अभी मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, उसमें मैं ज्यादा हार्ड एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ. सो लेट मी जस्ट सी द एग्जांपल, गाइस. जस्ट अ सेकंड, सुपरपोजिशन थ्योरम का ही एग्जांपल है क्या ये? ओके, ऑलराइट, दिस इज द example of good example of superposition theorem. Okay, so you can start drawing circuit with me, because initial stages we have to solve, you have to solve. This is a independent current source, and this is independent voltage source.
This is 3 volt. This is 6 ampere. This is 4 ohm. This is 2 ohm. We have one resistance here also, that is 1 ohm resistance is here, and we have the resistance 3 ohm here also. So what we have to find out, guys? We have to find out current through this I, this resistance 2 ohm resistance में से एक करंट I फ्लो हो रही है, जिसकी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. Okay, so how can we do this? We can go with our conventional method also. Okay, so if anyone wants to try, take a break of 1 or 2 minutes and you can try solving what is the current flowing through this 2 ohm resistance. Okay, so after that I will explain how we calculate with the help of superposition theorem, and then you can compare which method is simple for you. All right, so try the conventional way. How do we calculate this um, I current? I hope you people are trying. Okay, just just think about it. Don't give up. Okay, how can we calculate? What is the value of I? I know sometimes some questions makes us feel clueless. Okay, we don't know where to start. But these are the kind of questions that you are going to face in the gate examination. So you have to be used to it. All right. By nodal analysis we can do. Yeah, yeah. You can use any method, Raman. You can use any method. Even you can use Thevenin theorem also. You can use Thevenin theorem. You can use Norton, whatever you think. Norton theorem. Yeah, it will take time. That is the thing. If you go for the nodal analysis, na, it will take time. That is for sure. So that's why superposition theorem comes handy. Okay, so I guess I should explain this. Shall we go for the explanation, guys? Or anyone else is trying? And yeah, we should go for the explanation. What about others? Raman has said. So go for explanation. If anyone is trying, I don't want to interrupt you. Okay, guys, shall I proceed? Okay, okay, Ravi, Akhil, thank you. Yeah, thank you. So let's go ahead. So what I said, I have, sorry, what see this is this is seeming like I have written I here, but it is not I, huh? It is positive and negative. Okay, so सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है हमें? सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कहता है कि you put only one voltage source or current source at one time and replace all other voltage sources, current sources by their internal resistances. Okay, so guys, tell me, shall I proceed with the conventional method first or the superposition theorem first? Which one, conventional or superposition? Because conventional method will also be helpful for you. Which do you think? Superposition. Okay, guys, quick responses. If you think conventional is also important, huh? Shall we directly go to the superposition theorem? Hello. Yeah, fine. So directly go to the superposition theorem. नाउ कन्वेंशनल मेथड से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वो घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? सो हम सुपरपोजिशन थ्योरम से ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सॉरी. या, so what we have to do, we have to put only one
source. So which one we will put? We will put only 3 volt voltage source, and we will replace this current source with what? We will replace this with internal resistance. What is internal resistance of this current source? Open circuit, right? So our new circuit will be like what? See, our new circuit will be, let me just see again. Okay, our new circuit will be like this, guys. 3 volt, 1 ohm, 2 ohm, and 3 ohm. So this will be our I1, not the I. This is I1. Okay, we are using only one source. Now give it to try. अभी देखो यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना रहेगा गाइस? 3 वोल्ट ही रहेगा, राइट? यहाँ पे भी 3 वोल्ट ही रहेगा ना, प्लस माइनस 3 वोल्ट, isn't it? So current flowing through this will be 1 एम्पियर, isn't it? अभी 1 एम्पियर करंट, आई में से 1 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रही है, ऑलराइट? आई वन में से अभी यहाँ पे कितनी है? आई वन ही है, ऑलराइट? Now I1 current is coming here. So can we find out the value of I1 here directly? See, voltage here will be, this is positive, this is negative, and I1 voltage will be here. Here voltage will be 2I1, right? Correct me if I'm wrong. So we will start applying the KVL here in this loop, isn't it? So plus I1, no need to write plus, directly write I1 plus 2I1 plus 3 volt is equals to 0. So 3I1 is equals to minus 3, right? So I1 will be equal to minus 1 ampere. Minus 1 ampere आएगा ना रमन? I1 will be equal to minus 1 ampere. ठीक है? So this is not our final value. This is just the value of current flowing through that particular element because of the source 3 volt. अभी हमें क्या करना है guys? We have to see in this circuit we have to keep this source and replace this source. So voltage source को हम क्या करते हैं? Voltage source को हम करते हैं, what we do? Short circuit. शॉर्ट सर्किट करते हैं ना वोल्टेज सोर्स को, उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस अगर अगर हमें चेंज करना है, सो विल शॉर्ट सर्किट इट. सो हाउ विल बी आवर सर्किट? नाउ सी, ऑब्जर्व इन दिस सर्किट ओनली. जब ये मैं इसे ओके मैं इसे एडिट करने के बजाय दूसरा सर्किट लिखता हूं यहाँ पे, ओके? सो कि मतलब आपके पास नोट्स रहेंगे, ठीक है? या सो दिस इज my 4 ohm resistance, this is 2 ohm resistance, and we are going to keep the current source now here, 6 ampere current source, all right? And remaining circuit will be as it is. 1 ohm resistance will be between these two resistances. 3 ohm resistance will be here, and here will be short circuit, guys, right? And here we have 2 ohm, here we have 4 ohm. So circuit is similar. What I have done, I have just short circuited this voltage source, right or wrong? And I have kept this source. So अभी इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, सो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ 3 ओहम रेजिस्टेंस? और सॉरी, मैं भूल गया, यहाँ पे हमें निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू करंट फाइंड आउट करंट I2 नाउ. I1 हमने फाइंड आउट कर लिया है, अभी हमें I2 फाइंड आउट करना है. I2 इज बिकॉज ऑफ द सेकंड इंडिपेंडेंट सोर्स, ऑलराइट? सो जब I2 फ्लो होगी गाइस यहाँ से, सो यहाँ पे कितनी करंट होगी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द करंट हियर? Current flowing through this, no significance of 3 ohm resistance because short circuit is across it. How much current will be flowing through this 3 ohm resistance? Anybody? 0 ohm 0 ohm, sorry, yeah, 0 ampere current will be flowing through this resistance. ठीक है? इसी तरीके से सोचना है गाइस, मतलब एग्जाम में भी आपको यही सोचना पड़ता है, ओके? सो यहाँ पे 0 एम्पियर जा रहा है, सो I2 will be going here only, isn't it? I2 will be going here only.
नाउ अभी I2 यहां पे जा रहा है. So what can be the next step, guys? I2 is coming from here. Okay. Now see, 6 ampere current is here also. You agree with me? 6 ampere current is here also. So 6 ampere में से आप मुझे बताना, अभी ये दो ही रेजिस्टेंसेस वर्किंग में है, 2 ओहम एंड 1 ओहम. सो व्हाट विल बी द करंट? करंट विल स्प्लिट नाउ. अभी करंट स्प्लिट होगी 1 ओहम में और 2 ओहम में. सो वो कितने प्रोपोर्शन में होगी? कैन एनीबॉडी टेल? व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ ओके 6 माइनस I2? ठीक है रमन, हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन या जो तुम कह रहे हो ना 6 - I2 नीचे I1 में जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे. दिस विल बी द शॉर्टकट मेथड वी विल बी अप्लाइंग. वी आर अप्लाइंग अ डिफरेंट मेथड हियर. ऑपोजिट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. एग्जैक्टली द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. अभी रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या है? 1:2 है. तो करंट फ्लो कैसे होगी? 2:1 होगी. 2:1 होगी ना. तो 6 को हम 2:1 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 6 एम्पियर करंट अगर है तो 2:1 के फॉर्म में हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 4:2, मतलब 4 एम्पियर एंड 2 एम्पियर. इस तरीके से हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं 6 एम्पियर को. राइट ना. अभी ये तो हमें पता चल गया कि 6 एम्पियर करंट आ रही है इस ब्रांच में से. वो जाएगी, एक ब्रांच में जाएगी 2 एम्पियर, दूसरे ब्रांच में जाएगी 4 एम्पियर. ठीक है. तो अभी 2 एम्पियर किस ब्रांच में जाएगी एंड 4 एम्पियर किस ब्रांच में जाएगी, ये हमें सोचना है. 2 एम्पियर कहां पे जाएगी? 2 ampere will be going in the branch in 2 ohm resistance. यहां पे जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि करंट कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है. तो ज्यादा रेजिस्टेंस यानी कम करंट वहां पे फ्लो होगी, और कम रेजिस्टेंस यानी कि ज्यादा करंट यहां पे फ्लो होनी चाहिए. सो 4 एम्पियर विल बी फ्लोइंग थ्रू, सॉरी यहां पे आई क्यों लिख रहा हूं मैं? ओके. 4 एम्पियर विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस एंड 2 एम्पियर विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस. देखिए गाइस, कितना सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया ना. हमने कोई केवीएल लगाया, केसीएल तो लगाना पड़ा, केसीएल तो लगाना ही पड़ता है. ठीक है. सो इसी तरीके से आपको सोचना पड़ता है एग्जाम में. सो हमारा I2 क्या आया गाइस? I2 इज 2 एम्पियर. ओके. I2 इज 2 एम्पियर. नाउ I1 था हमारा -1 एम्पियर यहां पे. सॉरी, वेयर इज I1? Did I erase? No, no, it's here. See, I1 is -1 ampere, I2 is 2 ampere. So our I is, what is our I? I is equals to I1 plus I2. That will be equal to -1 plus 2 is equals to 1 ampere. गाइस, कन्वेंशनल मेथड से आप सॉल्व करके देखना और मुझे बताना कि कन्वेंशनल मेथड से जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें वन, सॉरी हाँ, ये वन एम्पियर आई की वैल्यू 1 एम्पियर ही आनी चाहिए. आप दोनों सोर्सेस को रखोगे, केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सब कुछ आप अप्लाई करोगे एंड यू कंपेयर द टाइम एंड टेल मी विच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर यू. आई गेस मेरे हिसाब से सुपरपोजिशन थ्योरम आपको इजी जाएगा. अभी यहाँ पे तो एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स था, टोटल सोर्सेस दो ही थे. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई एम गोना गिव यू, इट कंटेन्स three sources. Okay, so now give it a try. So that will be the last example for today guys, and I know that you people don't solve example at home except few people, so you have to solve it here only. Okay, now I'll be drawing the circuit. Please draw with me on your notebook and try solving it. I hope you are drawing with me. So यहाँ पे अभी हमारे पास तीन सोर्सेस है.
In this circuit we have three sources and we have to find out the value of v0 या फिर v पकड़ के चलो. Okay, v0 या फिर v कुछ भी. तो what will be the value of v0 guys? First of all, value of v0 will be equal to v1 plus v2 plus v3. v1 is what? v1 is voltage because of this source, v2 is voltage because of this source, and v3 is voltage because of this source. तो ये तीन अभी आपको क्या करना है, एक सोर्स वन एट अ टाइम रखना है, बाकी के सोर्सेस को ओपन कर दो या फिर शॉर्ट सर्किट कर दो एंड ट्राई फाइंडिंग v1 v2 and v3. Guys, you have 4 minutes. I'll wait till 9:20 and after that I'll explain this example and we'll close the class for today. Okay, give it a try. At least find out v1, and when you write v1, just write it like v1 because of this source, or else the second method you can directly calculate v0. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कन्वेंशनल मेथड से निकालना है, so you can draw that also. सुपरपोजिशन का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. Anyone will do. 3-4 minutes I think are enough. Guys, I'm here only. Okay, you keep trying please. Okay, any answer? v1 v2 कुछ मिला या फिर v3, तीनों में से कोई एक? Okay, v1 मिला. What is v1? 10 volt. Good. v2 is it minus 30 or minus 3? If it is minus 30 then it's wrong. I feel so. All right, yeah, try again. Okay, no issues. Others are also trying, I hope. Did anyone get v1 v2 v3, any of them? इस करना क्या है, हमें v1 निकालना है, तो बाकी दो सोर्सेस, कोई भी दो सोर्सेस को आप निकाल दो. कैसे निकालोगे? करंट सोर्सेस से दो, वोल्टेज सोर्स को रखो, दो करंट सोर्स को निकाल दो, ओपन सर्किट कर दो. v1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, मतलब आपको ड्रॉ करने की भी सर्किट जरूरत नहीं है. देखो अभी ऑब्जर्व करो फिगर की तरफ. दो करंट सोर्सेस अगर निकल जाते हैं तो वो जो ऊपर का 6 ओहम रेजिस्टेंस है ना, वो नीचे के दो रेजिस्टेंसेस 4 ओहम और 2 ओहम वो सीरीज में है, तो वो भी 6 ओहम हो जाएगा. दो 6 ओहम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे, इसका मतलब वहां पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओहम रहेगा. ठीक है, तो 3 ओहम एंड 3 ओहम दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो दोनों के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा. ठीक है, तो 20 को हम इक्वली डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट. सो पहले 3 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट रहेगा, दूसरे 3 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट रहेगा. दिस इज v1 बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट.
ठीक है, चलो इट्स 9:21 ऑलरेडी, आई स्टार्ट सॉल्विंग, ओके, डोंट माइंड, या। सो देखिए, मैं क्या बोल रहा था, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, सो व्हाट विल बी आवर सर्किट, सी, इफ वी रिमूव दिस टू, 20 volt, 3 ohm, 4 ohm, 2 ohm एंड 6 ohm, राइट, यही सर्किट है ना हमारा, ये वोल्टेज सोर्स, सॉरी करंट सोर्स निकल गया, ये करंट सोर्स निकल गया, सो 6 ohm इज इन पैरेलल विद 6 ohm, सो इसका इक्विवेलेंट बनेगा 3 ohm. Now 3 ohm will be in parallel with 3 ohm, तो यहाँ पे हमें V0 निकालना है ना, तो अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, सॉरी V0 नहीं निकालना है गाइस, हमें V1 निकालना है, सो V1 will be 10 ohm, 10 volt. I'm very bad at drawing also and the units also, okay, so please cope up with me, yeah. So V1 is equals to 10 volt आया, अभी V2 कैसे निकालेंगे, V2 निकालने के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, 20 वोल्ट को निकालना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किटेड, बाद में किसको निकालेंगे हम, 1 एम्पियर को भी निकाल देंगे, और 1 एम्पियर की जगह पे विच विच वी विल प्लेस, वी विल कीप 2 एम्पियर एज इट इज, ठीक है। तो सर्किट देखिए कैसे ड्रॉ होगा, सर्किट विल बी लाइक दिस, ये 6 ओहम रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में जो है वो ठीक है, 6, यहाँ पे 2 एम्पियर का जो सोर्स है हमारा, वो हमने रख दिया है, ये 6 ओहम है, ये 2 एम्पियर का सोर्स जैसा का वैसा है, नीचे क्या चेंज करने वाले हैं हम, 4 ओहम को और 2 ओहम को हमें वैसे ही रखना है, 1 एम्पियर को तो हम निकाल देंगे, और 20 ओहम को जो है वो 20 वोल्ट को जो है हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे होगा ये, दिस विल बी अगेन 6 गाइस, इजंट इट, 4 + 2 तो 6 ही होगा ना यहाँ पे भी, एंड लास्टली व्हाट वी हैव शॉर्ट सर्किट हियर, एंड शॉर्ट सर्किट है तो इसका मतलब ये जो 3 वो हमें हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको भी हम यहाँ पे पैरेलल में लिख सकते हैं, ओके। सो कैसे बनेगा, ये 3 ओहम है, ठीक है। सो बताओ गाइस कैसे होगा, और हमें जो वोल्टेज निकालना है ना, उसकी पोलरिटी मत भूलना, पोलरिटी हमारी ये रहेगी, V2 विल बी दिस 6 ओहम इज इन पैरेलल विद दिस 6 ओहम, तो ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों का होगा हाउ मच, 3 ओहम होगा, ठीक है। अभी 3 3 ओहम के दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, 3 3 ओहम के दो रेजिस्टेंसेस गाइस पैरेलल में हैं, ठीक है। सी, बिकॉज ऑफ दिस 6 ओम एंड 6 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस बना जो कि इससे के पैरेलल में है, 2 एम्पियर करंट अगर दो इक्वल, सॉरी 1.5 कैसे, 1 एम्पियर करंट जाएगी ना उसमें, रमन, हाँ नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है ना हमें, व्हाई वी विल रिमूव, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो ना, अभी 6 और ठीक है, मैं यहाँ पे उसको फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो हमारा सोर्स था ना 2 एम्पियर का, मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ, ओके, एंड दिस इज 1 3 ओहम, दिस इज अनदर 3 ओहम, ठीक है, ये 3 ओहम है, ये 3 ओहम है, तो इसमें 1 एम्पियर जाएगी, इसमें 1 एम्पियर जाएगी, और इसमें 1 एम्पियर जाएगी, बराबर ना, नो नीड इजंट इट। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज हुआ -3 वोल्ट, देखिए हमारी यहाँ पे पोलरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, लेकिन करंट यहाँ से लेफ्ट से इन हो रहा है, मतलब हमारा जो V2 है वो आएगा -3 वोल्ट, any confusion in V2, any confusion in V2, if there is any, let me know, we can discuss this in the next class also, but I want to finish this in this class only, okay, so that in the next class we can fully focus on maximum power transfer theorem, and
Which theorem is there? No, no theorems. Okay, maximum power transfer theorem is the only one. Guys, all others, Raman, except Raman, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है लास्ट 3-4 मैसेजेस का. एनी कंफ्यूजन? मतलब इज इट ओके ना जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैलकुलेशन दिमाग में? ठीक है ना सब कुछ, या फिर समझ में नहीं आ रहा है? Guys, please everyone respond one last time, for one last time. Okay, it's about like we are about to end the class. कंफ्यूजन है कि समझ में आ रहा है? ओके ओके, थैंक यू अखिल. शुभम, ऑल राइट. एवरीवन, सृष्टि, आदित्य, थैंक यू. शार्दुल, ओके. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. या थैंक्स. ओके वेल. ठीक है. सो V2 is equals to -3 वोल्ट आया. नाउ लास्टली वी हैव टू फाइंड आउट V1 गाइस. तो सॉरी, V1 निकाल दिया हमने, V2 निकाल दिया, V3 निकालना है. तो V3 के लिए क्या करेंगे हम? इस 2 ओम को निकाल दो, इस 20 वोल्ट को निकाल दो, और इस 1 एम्पियर को सिर्फ यहाँ पे रख दो. ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा. चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से इसे. दिस इज 6 ओहम, राइट. एंड वो हमारा 2 एम्पियर का तो निकल गया. अभी ये 4 ओहम और 2 ओहम को हम ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक करंट सोर्स है. ठीक है ना, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स यहीं पे है. सो इसे हम निकाल नहीं सकते. वोल्टेज सोर्स को तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया. हमें निकालना है इस 3 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस V3 निकालना है. अभी यहाँ पे हमें ये 2 ओहम रहेगा, ये 4 ओहम रहेगा, और ये है 6 ओहम. सो नो, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसमें से करंट कितनी फ्लो रही है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, सो दैट विल बी एबल टू कैलकुलेट लास्ट वन, सॉरी, V3, isn't it? So how do we proceed? How do we proceed? Any idea? 1 ampere current is here. Okay, the 1 ampere, there should be split between in this branch and in this branch, but it star to delta. Okay, that is also fine. You can try that. Star to delta. All right. Okay, you try star to delta. I'll give you one other method. Okay, so मान लो कि अभी ये जो, sorry guys, we are gonna cross the time I guess. Okay, so ये 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर में से x यहाँ पे जा रही है, so यहाँ पे कितनी जाएगी? यहाँ पे करंट जाएगी 1 माइनस एक्स. ऑल राइट. सो यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा गाइस? यहाँ पे रहेगा 4x. ऑल राइट. और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा 2 माइनस 2x प्लस माइनस. ओके, सो अभी देखो, ये जो x करंट है, ये x करंट कंप्लीटली कहां पे जाएगी गाइस? दिस विल बी हियर, इजंट इट? ये कंप्लीटली x करंट यहाँ पे चलेगी, मतलब यहाँ पे इधर कोई भी करंट नहीं जानी चाहिए, राइट? नो करंट शुड बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन. नाउ अभी यहाँ पे 6, सॉरी, यहाँ पे जो है वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो है वो हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है. सो जो हमारी करंट है वो भी इसी तरीके से स्प्लिट होनी चाहिए. ओके, अभी जो करंट आ रही है, व्हाट इज द करंट कमिंग हियर? इट इज 1 by x करंट इज कमिंग हियर, राइट? सो स्प्लिट द करंट बिटवीन दीज एंड दीज ब्रांचेस. ठीक है, तो इस करंट को स्प्लिट अगर आप करोगे तो आपको x मिलेगा. x के बाद में आपको क्या करना है? यहां पे इस लूप में, यहां पे इस लूप में आपको KVL अप्लाई करना है. सी, यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच बेस्ड ऑन दिस करंट. ठीक है, 1 बाय एक्स करंट यहाँ पे जा रही है इस ब्रांच में, या इस नोड पे आके ये करंट स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ जाएगी, यहाँ पे कुछ जाएगी. सो यहाँ पे जाने के बाद में आपको इस लूप में KVL अप्लाई करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो कुछ x के फॉर्म में ही करंट यहाँ पे भी फ्लो हो रही होगी. ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल गेट द आंसर एज our V3 will be, guys, V3 will be, V1 हमारा 10 था, V2 जो है वो हमारा -3 वोल्ट था, और V3 जो है वो हमारा 1 वोल्ट आना चाहिए. एंड V should be equal to 10 minus 3 is 7, 7 plus 1 is 8, 8 वोल्ट. So V should be 8. ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे V निकालना है ना, या फिर V0 निकालना है, इट शुड बी 8 वोल्ट. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना. आई विल बी गिविंग यू दिस PDF.
ठीक है. So it's at 9:30 already. I think we should stop here. So guys, thank you, bye bye, and now you can leave the class. Please take care. Thank you, bye. Any question? If you have any questions, you can ask me, or else you can leave. No issues. Yeah, bye bye. I'll be sharing this with you. I'll be sharing this document with you. Okay. Yeah, Shubham Shrishti, do you have any question? If you have any question, you can turn on your mic also. Shrishti, are you there? Okay, fine.